शार्लोट नॉर्थ कैरोलिना में। वो चार्ल्सटन से ऑलमोस्ट 4 आवर्स का ड्राइव किया और हम यहाँ आए। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है सलेनबर्गर एविएशन म्यूज़ियम। यहाँ पे 30 से ज़्यादा फ़्लाइट्स रखे हैं और वो देखने लायक है। बट इसका मेन जो अट्रैक्शन है वो अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा तो बाद में बताते हैं, आइए। हम म्यूज़ियम के अंदर आ गए हैं। इसका टिकट है $24 पर पर्सन। बट अगर आप एविएशन में हो, टीचर हो या मिलिट्री में हो दैन यू गेट $4 डिस्काउंट। जो मैं बाहर बात कर रही थी कि ये म्यूज़ियम का सबसे मेन अट्रैक्शन है वो है, अगर आपको याद है तो 2009 में बहुत बड़ा न्यूज़ बना था। एक फ़्लाइट जो न्यूयॉर्क पे उड़ रहा था और न्यूयॉर्क में लैंड होने वाला था, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ एंड इट कुड नॉट लैंड ऑन न्यूयॉर्क और उसको इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा हडसन रिवर पे। और वो अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब हर जगह पे ये होगा, आप प्लीज़ जाके देखिए। आई थिंक एक मूवी भी बना है उसके ऊपर। वो कैप्टन ने इतना काम और कूल रह के पहले सब पैसेंजर्स को निकाला और बाद में आए एंड जो टूरिस्ट बोट्स वो सब थे वो इमीडिएट रेस्क्यू में आ गए। वो जो घटना थी उसका और वो जो एयरक्राफ्ट था A320 वो यहाँ पे रखा हुआ है एंड मिरेकल ऑन द हडसन करके बहुत बड़ा एग्जिबिट यहाँ पे रखा है। ये है हीरो कैप्टन चार्ल्स बी सलेनबर्ग और उसके उस पर उनके नाम पर से ये म्यूज़ियम का नाम रखा है सलेनबर्ग एविएशन म्यूज़ियम। इसके पहले इसका नाम था कैरोलिना एविएशन म्यूज़ियम। तो ये देखते हैं। US Airforce C-130 इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1956 और 1956 से लेके आज तक वो अभी भी करते हैं। इनिशियली इसको जो बनाया गया था वो ट्रुप के मूवमेंट के लिए बनाया गया था, बट अभी ये मेडिकल सप्लाई, इवन रिफ्यूलिंग एंड रेस्क्यू मूवमेंट के लिए भी यूज़ हो रहा है। ये जो है वो है T-28 ट्रोजन, छोटा सा क्यूट सा। इट वॉज प्रोड्यूस बिटवीन 1950 एंड 57 ट्रेनिंग के लिए यूज़ करना चाहता था। और अभी ये T-28 है, अभी उसको रिप्लेस किया गया है T-6 CH जेट से। So this is some of the aircrafts here, all the vintage aircrafts. You can see here. देखिए, private flying, Gulfstream DC-3. This is the Charlotte Airport runway. You can see the flight coming here. Towards the end of the runway and it's going to take off now. Edge of the runway. That's the airport over there. See, this flight is landing here. One is about to take off. That's pretty close. About to take off.
some of the aircrafts here. Sullenberger Aviation Museum. It's a little cold outside because of the breeze. Aviation Society. Different types of aircrafts. Tomcat. F-14 Tomcat. Different types of aircrafts. F4 Phantom. Before me was the life that wasn't going to happen. The grandchildren I wouldn't see grow up, you know. My heart was beating very, I remember it was deafening, like I couldn't hear anything because my heart was beating so loudly. Wright brothers हमारी फर्स्ट एयरप्लेन इसको बोलते हैं राइट काइट, ये वुडन फ्रेम बनाया है एंड ये देखिए मेरी फर्स्ट एयरप्लेन Could be a prototype. Somebody behind yelled, "Be ready to open those doors." When they screamed at somebody up by the door, said, "We got it." So, मैं इसके बारे में बात करी थी, मेरे को था Hudson US Airways Flight 1549 on January 15, 2009. यहाँ से फ्लाइट ऊपर गया और ऊपर अपना अल्टीट्यूड पकड़ ही रहा था, तब दोनों इंजन फेल हो गए और दोनों इंजन में फायर होने लगा एंड कैप्टन सली उन्होंने रिवर के ऊपर लैंड किया एंड सबको इवैक्यूएट किया। अभी सोचिए इट्स जनवरी न्यूयॉर्क, सो पानी बहुत ठंडा है, लिटरली आइस है पानी पे। सो लाइक पानी के अंदर भी गिरोगे तो विद इन फ्यू मिनट्स समबडी कैन डाई। सो जो लेडर होता है, जो राफ्ट होता है, इसके ऊपर लोग थे एंड जैसे ये हडसन रिवर है न्यूयॉर्क का, तो बहुत सारी फेरीज थी आसपास। सो रेस्क्यू होता है, उसका पहले वो फेरी में आके लोगों को बचाना शुरू कर दिया। मेरे को ये है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट है, एक भी जान नहीं गई, एक भी जान नहीं गई, सब लोग बहुत सुरक्षित तरीके से बाहर आए। अब पीछे देख रहे हैं उसमें जो फ्लाइट में रखा था उनका रिकॉर्ड्स, कैप्टन का यूनिफॉर्म।
से चौंकाने वाली देख के सब लोग एकदम शांत। तो ऐसा भगवान न करे ऐसा कुछ होता है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू हैव टू बी काम। हमारे साथ हुआ था ना स्विट्जरलैंड का फ्लाइट में पर्ल and we had to do emergency landing, but luckily we survived. फोन, किसी का बैग है, टूथब्रश So, is this the aircraft that landed on the Hudson? So these are the engines that took the bird hit. I think so. This is the aircraft, right? Is this the aircraft? Yes. US Airways. Can you hear the flights taking off from the runway? Tribute to courage. We do have a crew member and with Captain Sully, of course, First Officer Skills, Sheila Dale, Donna Dant, Doreen Welsh. It's no damage, the impact on the water. You can see here the top where a bird hit. सोचिए इतना छोटा bird, but वो impact इतना होता है because of the flight speed. Badly damaged engine.